Hello kids, welcome back. Welcome back to your computer class. And kids, we have to start this chapter that is starting logo. We have already done this, है ना? Previous class में ये किया था, लोगो के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी. Today we will revise it and then we will move toward the next chapter. So let us see what this chapter is all about. So in this chapter we have to read about logo, logo turtle, logo screen, home of the turtle, exiting logo. Okay, now तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? अबाउट लोगो, दैट व्हाट इज लोगो, लोगो का टर्टल क्या होता है, एंड होम ऑफ द टर्टल क्या होता है, हाउ वी कैन एग्जिट लोगो. Okay, so let us see what this computer wants to tell us. See, hello friends. So far, hello friends, so far have you learned how to give commands to a computer through the click of a mouse? Let us learn about a programming language. Now what we have to do, we have to learn about the programming language in which commands are given by the keyboard, in which commands are given by the keyboard. Logo. So logo stands for language of graphic oriented. The full form of logo is language of graphic oriented. ठीक है, logo is what? Logo is a programming language. Logo is what? Logo is programming language. Okay. Logo is what? Logo is a programming language that is used to draw figures, calculate numbers and print words by giving simple command with the help of a keyboard. So logo helps us to, logo is a programming language and is used to draw figures, calculate numbers and print word by giving simple command with the help of a keyboard. You can draw different shapes and figure on the computer screen with the help of logo. ठीक है, लोगो पे हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल से फिगर शेप्स बना सकते हैं. वी कैन प्रिंट नंबर ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अवर कीबोर्ड. कीबोर्ड पे कमांड देके वी कैन डू दिस. Okay, so what is logo turtle? Logo uses turtle to draw figures and lines on screen. Logo uses turtle to draw figures and line on screen. Turtle look like little triangle on the logo screen. Turtle look like little triangle on the logo screen. See, this is what turtle है ना. देखो one, this is what, see this is a turtle, this is a turtle. So logo uses turtle to draw figure and line on screen. Turtle looks like a little triangle on the logo screen. It works like a pen to draw figures and lines on a logo. Okay, logo uses turtle to draw figures and lines on screen. Turtle looks like a triangle on the logo screen. It works like a pen to draw figure and lines on logo. The pointed end of the turtle is called the head and the wider end of the turtle is called its tail. The pointed end of the turtle is called head. The pointed end is called the head and the wider end of the turtle is called its tail. ठीक है, देखो pointed one, this one is pointed ना, so this is called its head and this the wider part is termed as tail, है ना. tail and head होते हैं ना. Okay, now next is what?
Turtle can move right, left, backward, forward on our command or instruction. Turtle can move right, left, backward, forward on our command or instructions. Okay. Now let's move ahead. Chalo bhai. Next is what? Do you know? So let us see. Do you know? Logo was designed in 1967 by Daniel G. Bobrow, Valley Furies, and Seymour Papert and Cynthia Solomon. Okay, so these were the individuals who has designed the logo in which year? 1967. Keep this in mind. In which year? In 1967. Now let's see. Yeah, this is what logo. अब देखो जब मैम ने लोगो स्क्रीन ओपन की तो here you can see, देखो this pointed side is what? This pointed side is its head, है ना. Pointed side क्या होगा बेटा? Pointed side क्या होगा? Head. And this wider side will be its tail. Wider side क्या होगा? Tail. Okay. Head and tail. ओके ओके, हेड एंड टेल. ठीक है. चलो अब आगे देखते हैं. Next is starting logo. Next is what? Starting logo. देखो, what are the steps to start logo? Okay, so you can start logo program by following these steps. Start your computer to open Windows desktop. Click on the start button. Click on all program. Click on MSW logo. The logo screen will appear. अब चलो देखते हैं. यहाँ पे मैं गई फिर से. I have clicked on the start button. I have clicked on the search, and if I search here logo, see what I'll get. Yes, I will get Microsoft Windows logo. अच्छा चलो दूसरे तरीके से देखते हैं. क्या मेरे Windows यहाँ पे भी मुझे लोगो मिलेगा? क्या मिलेगा लोगो? Let's. Yes, देखो यहाँ पे I have got MSW logo, Microsoft Window logo, Microsoft. देखा? Got it now? अगर हाँ, तो click on the start button, click on all program, click on MSW logo. The logo screen will appear. This logo screen will appear. Now logo screen. Before working in logo, you must understand the logo screen. Logo screen देखो भाई, लोगो पे वर्क करने से पहले we must understand about the logo screen. लोगो के बारे में हमें पता चलना जरूरी होता है. Before working in logo, you must understand the logo screen. Okay, so now see what happened. This is what? This is your main screen. Okay, and this center में क्या है? Turtle. देखो ये जो अच्छा देखो लोगो स्क्रीन बेसिकली देखो कितने पार्ट में डिवाइडेड है. ध्यान से देखो लोगो स्क्रीन 2 पार्ट में डिवाइडेड है. लोगो स्क्रीन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में. हाँ देखो ये दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन, ये वाली फर्स्ट स्क्रीन एंड द नीचे वाली इज सेकेंड स्क्रीन. 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी लोगो स्क्रीन. Okay, see first one is what? Main screen,
and this lower one is what? कमांडर विंडो. चलो विंडो यहाँ पे दिखाएं. ओके यहाँ पे भी देखो, ये जो इधर स्टार्टिंग में दिस इज व्हाट मेन स्क्रीन एंड दिस इज व्हाट कमांडर विंडो. दिस इज द मेन स्क्रीन है ना, एंड दिस इज व्हाट कमांडर विंडो. मेन स्क्रीन एंड कमांडर विंडो. ठीक है, मेन स्क्रीन इज द प्लेस जहाँ पे क्या होता है, जो भी हम ड्रॉ करते हैं वहां पे ड्रॉ होता है. ठीक है, वॉट एवर पिक्चर विल ड्रॉ वो यहाँ पे ड्रॉ होगा. कमांडर विंडो में व्हाट हैपन, नाम से ही पता चल रहा है कमांडर विंडो, दैट मीन्स व्हाट हैपन हियर, वी गिव कमांड हियर. यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी गिव कमांड. नाउ ध्यान से देखो, कमांडर विंडो अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिकॉल लिस्ट बॉक्स एंड द कमांड इनपुट बॉक्स. टू पार्ट में कमांडर विंडो भी क्या है, डिवाइडेड है. रिकॉल लिस्ट बॉक्स एंड कमांड इनपुट बॉक्स. रिकॉल लिस्ट बॉक्स एंड कमांड इनपुट बॉक्स. ओके, कमांडर विंडो एंड रिकॉल लिस्ट बॉक्स. ठीक है, as you see in the picture, the logo screen is divided into the parts main screen and commander window. Main screen and the commander window. Main screen, it is the graphic area of the window where the figures are drawn. It is what, it is the graphics area of the window जहाँ पे क्या होता है, figures are drawn. It is the graphic area of the window where the figures are drawn. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, we call it main screen. ठीक है. Now next is what, commander window. This area of the window is used to write the command that will draw shapes and figure. This area of the window is used to write the command that will draw shapes and figure. This area of the window is used to write the command that will draw the shapes and figure. The commander window is again divided into the two part. What happened? Commander window is again divided into the two part. Commander देखो अभी बताया मैंने कि commander window क्या हो जाता है, two parts में क्या हो जाता है, divide हो जाता है. First is what? First is recall list box and second one is command input box. Recall list box and command input box. Recall list box is box, whatever is written in the command input box is recorded in recall list box. देखो मतलब क्या, whatever is written in command input box, see this is what command input box. So whatever is written in command input box that you will get in recall list box. ठीक है, this is देखो command इनपुट बॉक्स. यहाँ पे व्हाट हैपन, हियर वी गिव कमांड. यहाँ पे जब हम कमांड देंगे, जैसा ही कमांड हम देंगे तो दिस टर्टल व्हाट विल हैपन, इट विल मूव. दिस टर्टल विल मूव. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट कमांड लिस्ट, दिस इज व्हाट रिकॉल लिस्ट बॉक्स. जो भी कमांड हम देते हैं दैट वी कैन गेट हियर, यहाँ पे हमें वो मिलेगा, वट एवर द कमांड वी विल गेट we can get it here. Okay, I hope it is clear to you all. Let's see. Now next point is home of the turtle. Turtle का घर, where is the home of the turtle? Whenever you start logo, you can see that turtle is in the middle of the screen. ठीक है, whenever we will start the turtle, it is we can see that turtle is where, it is in the
middle of the screen. So this is the starting position of the turtle and is called as the home of the turtle. देखो यहाँ पे टर्टल कहाँ है, मिडल ऑफ द स्क्रीन पे है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, we call this as home of the turtle. We call this as home of the turtle. The blank area where the turtle move is called the field of the turtle. The blank area where the turtle move is called the field of the turtle. अब देखो यहाँ पे टर्टल कहाँ पे है, सेंटर में है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट होम ऑफ द टर्टल. और ये जो बाकी की ऐसी स्पेस बची सी है, यहाँ पे जो बाकी की हमारी स्पेस यहाँ पे बची है, दिस स्पेस, दिस होल स्पेस, ये क्या होता है, फील्ड ऑफ द टर्टल. फील्ड ऑफ द टर्टल मतलब दिस इज द प्लेस वेयर टर्टल कैन मूव, वेयर वी कैन मूव द टर्टल. This is the place where what we can do, we can move the turtle. So let us try to draw something with turtle. ठीक है, turtle लोगो पे हम क्या करते हैं ना, we give some command. चलो मैं कुछ कमांड देख के देखती हूँ क्या होता है. Okay, next is देखो टर्टल मूव कर रहा है ना, टर्टल इज मूविंग ना. सी व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, टर्टल सा बन के आ गया ना. यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आपके स्क्रीन पे बन गया, एक टर्टल बन के आ गया ना, है ना. यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्या हुआ, यहाँ पे यू कैन सी दैट एक ट्राइंगल सा बन गया. वी हैव मेड दिस ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ कमांड्स. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, this is what, this is recall list and this is what, window command list. यहाँ पे कमांड दिया और यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास पूरी लिस्ट है. और इस तरह से हमारा टर्टल क्या हुआ, अपनी जगह से मूव करके उसने क्या किया, कुछ बनाया. Okay, now let us do one more thing, let us clear the screen. Yes. Okay, so now if I want to make something else, okay, let us try making something. अगर मैं बोलूं कि चलो भाई टर्टल फॉरवर्ड 100, देन राइट 90. इसको नहीं पता. ओके, समथिंग इज रॉन्ग, आई हैव गिवन द रॉन्ग कमांड, राइट 90. तो देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं कमांड दे रही हूँ, टर्टल क्या कर रहा है, अपनी जगह से क्या हो रहा है बेटा, मूव कर रहा है. अगेन इफ आई गिव राइट 90, what will happen, and then forward 100. Okay, and then again write 90 and forward 100. See what happened, हमारे स्क्रीन पे क्या हो गया, एक स्क्वायर सा बन के आ गया ना. देखो हमने क्या किया, हमने लोगों की मदद से, हमने कमांड्स एंड लोगों की मदद से हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया. दिस आई विल टीच यू हाउ टू मेक सिंपल शेप. ये आई विल टीच यू. ठीक है, ये तो मैम आपको सिखाएंगे कि हाउ वी कैन मेक सिंपल शेप्स. ओके, तो ये हमने करना सीखा. ठीक है, दिस इज द शेप दैट वी हैव ड्रॉन यूजिंग व्हाट, यूजिंग टर्टल. चलो वी विल प्रैक्टिस सम मोर शेप्स. ओके, so the next topic that we have to see is exiting logo. Next topic is what, how we can exit the logo, what are the ways through which we can exit the logo. But before moving toward the exiting the logo, we'll make some more shapes. Okay, so let us try making some more shapes.
Let us try making some more shapes. Okay, so first of all, let us clear the screen. So I'm going to clear the screen. So what are the command to clear the screen? CS is the command to clear the screen. I have cleared the screen. देखो, here I want to show you कि we can make different shape using logo. ठीक है, we can make different shape using logo. Okay. देखो, जैसे जैसे मैं कमांड दे रही हूँ मेरी स्क्रीन पे क्या हो रहा है, टर्टल क्या होता जा रहा है, टर्टल मूव करता जा रहा है। जैसे जैसे मैं कमांड अपनी स्क्रीन पे दे रही हूँ उस हिसाब से टर्टल क्या कर रहा है, मूव करता जा रहा है। देखो, है ना, ये एक जिग जैक फेज, जिग जैक फिगर्स दिख रहे हैं ना हमें स्क्रीन पे। तो ये हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन हियर, हियर वी हैव what we have done here we have given the command and turtle was moving according to that command only, है ना। चलो, अच्छा ठीक है। तो now next topic is how we can exit the logo। कैसे हम क्या कर सकते हैं, we can exit the logo। logo हम कैसे exit कर सकते हैं, click on file menu in the menu bar। सबसे पहले there are two ways, click on the file menu in the menu bar, ठीक है। after clicking on the file menu what you have to do, you have to click on the exit। चलो let us try doing this। देखो अब here जैसे सारे एप्लीकेशन जितने हमने पढ़े उनमें हमने देखा कि यहाँ पे टैब्स होते हैं। तो you can see here also we are having different, you can see here also you can get different options। तो you have to click file, ठीक है। फाइल पे क्लिक करेंगे and then we will click on the exit। click on the file and see what is the last option, exit। फाइल पे क्लिक किया and the last option is exit। click on exit and see what happened, logo disappear, MSW logo disappear from my screen, है ना। you can see ना logo what happened, it disappeared from my screen। okay 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 now let us move ahead। what is the next thing that we have to see, next is the type by in the command input box। what is the next step to exit the logo, you have to type by in the command input box and then you have to press the enter key from your keyboard। press the enter key from your keyboard, just press enter key and what will happen, you will exit the, what will happen, you will exit the computer, that you will exit the logo। चलो देखते हैं, let us see। first of all we have to open the logo ना, second time practice करने के लिए we have to open it। so I have, fine, I have opened it, now I want to exit it, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कमांड इनपुट बॉक्स में, कमांड इनपुट बॉक्स में मैं गई, यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया, BYE, बाय, ठीक है। बाय एंटर किया, बाय टाइप किया एंड देन आई विल प्रेस एंटर।
एंड सी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मेरे स्क्रीन से वो गायब हो गया. ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू डू द सेल्फ इवेल्युएशन. It is our time to do the self evaluation. Let us start. I know that logo stands for language of graphic oriented. So is it true or false? Logo is what? Language of graphic oriented or not? Yes, we agree with this statement. Okay. Now next is what? I know that logo is a programming language. Well, yes, logo is what? Logo is a programming language. So yes, we agree with this statement also. So we will put tick mark here also. I fully know that logo screen is divided into two main screen and commander window. Yes, this is true that logo screen is divided into. So yes, this statement is also true. I know that commander window is used to write commands. Commander window is used to write the command. Yes. The triangle on the middle of the main screen is called the turtle. Is it so? Yes, correct. The triangle in the middle of the screen is called the turtle. So this statement is also true. I know that the middle of the logo screen is the home of the turtle. Now it's time to do the pick the correct answer. Dash is the logo turtle. Which one of these is the logo turtle? The first one, this triangle, little triangle is the logo turtle. Logo command are entered in. Logo commands are entered in command input recall list main screen. It is entered in command input box. Pointed end of the turtle is known as tail, head, both A and B. Pointed end. See, this is a turtle and the pointed end is known as head of the turtle. Now next is what? Starting position of the turtle is known as home. Starting position of the turtle is known as home. Okay, got it? Okay. So let us recall it once again. Dash is the logo turtle. This triangle is the logo turtle. Logo command are entered in command input box, recall list main screen. So logo command are entered in command input box. Next is what? Pointed end of the turtle is termed as head. Pointed end of the turtle is termed as head. Starting position of the turtle is known as the home. Starting position क्या कहलाती है? Home of the turtle हम कहते हैं. So kids, this is it for today. Now tomorrow we will start with fill in the blanks. Okay, so we will meet in our next class. Till then, goodbye and don't forget to revise the chapter.